morning, class. Today we are going to learn about the thermodynamic principle in extraction of metals. So basically this is the thermodynamic principle. Delta G is equals to delta H minus D delta S, where delta H represents the change in enthalpy and delta G is equals to Gibbs free energy, while delta S is refers to entropy change. Alright, so delta G must be negative for the spontaneous reactions. Alright, next here we can see metal and oxygen combine to form metal oxides. Basically हमने मेटल ऑक्साइड्स को प्रिपेयर किया था. अब मेटल ऑक्साइड्स को हमें क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है. So they can be reduced in the presence of carbon monoxide. When we use carbon, they may produce carbon monoxide as a gas or carbon dioxide as a gas. But when we use carbon monoxide, then carbon dioxide can be produced. So we have used such reaction in which delta G must be negative. Alright. What is a Lingam diagram? A Lingam diagram basically a plot, or we can say a curve between delta G and the temperature. Alright, this is we can use for reduction of metal oxide. So this is the graph here. डेल्टा जी जिन रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव आ रहा है हम उसको रेफर नहीं करते हैं. दैट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ Mg हैज हायर स्टेबिलिटी. ऑलराइट, क्योंकि इसका ग्राफ सबसे नीचे की तरफ है, देयरफॉर इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो भी कैसी होगी, हाई होगी. एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए पॉइंट से पहले Mg ए पॉइंट से पहले Mg का कर्व नीचे की तरफ है. दैट मीन्स इट हैज मोर नेगेटिव वैल्यू. सो इसके अंदर एबिलिटी है कि वो एल्युमिनियम को रिड्यूस कर सकता है. लेकिन अब हम एल्युमिनियम का ग्राफ ए पॉइंट के बाद देख रहे हैं. ए पॉइंट के बाद इसका ग्राफ मैग्नीशियम से नीचे की तरफ वैल्यू शो कर रहा है. दैट मीन्स एल्युमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम. नाउ ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, इसके अंदर आयरन और डाली जाती है विद लाइमस्टोन एंड कॉक. एक फर्नेस है जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं पिग आयरन और कास्ट आयरन ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड्स होती हैं, ये ऑक्साइड्स लाइमस्टोन कॉक के साथ रिएक्ट करती हैं और खुद क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं. So pig iron and cast iron में क्या डिफरेंस है? Pig iron contains about 4% of carbon while cast iron contains 3% of carbon content. Cast iron can be prepared by melting pig iron with the scrap iron and coke. Alright, next one is the wrought iron. Wrought iron basically
What is wrought iron? Wrought iron is a pure form of iron, we can say. It just contain 0.1 to 1% of carbon content. Next is electrochemical principle of metallurgy. That means delta G is equals to minus NFE naught. Here N is a constant, F is constant. So our basic value is depend on E naught. It can be positive or it can be negative. If it is negative, then this delta G becomes positive. So the reaction becomes non-spontaneous. So what is the favorable value of delta E naught, or we can say E naught? So favorable value for the E naught is positive values. Alright, so we have to choose positive value of E naught. Like in case of aluminium, एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है. एल्युमिनियम जो एक्सट्रैक्ट आउट होती है वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के ऊपर बेस्ड होती है. ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्युमिनियम प्योर फॉर्म में मिल जाता है. ये चैम्बर होता है, स्टील का बना हुआ होता है ये चैम्बर, और पर्टिकुलरली इस प्रोसेस को बोला जाता है हेल्ट-हेरोल्ड प्रोसेस. ऑलराइट, इसके अंदर हम Na3AlF6 और CaF2 का यूज़ करते हैं. इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, जिससे कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, कॉपर को किस तरह से निकाला जा सकता है, उसकी लो ग्रेड और से with the help of hydrometallurgy process. In this, we can use the solution of copper. Alright. So basically हम उसमें हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा सकते हैं और स्क्रैप आयरन से रिएक्ट करवा सकते हैं. Alright. Thank you. So your homework is you have to do question number 1 to 10.